Hello everyone, once again welcome you all in our maths class. As you see on the screen, you can understand that today we will learn about how to tell the time. So before starting this video, I want to tell you few things. Through this video, you will learn two things. First thing that there are two types of clocks. One is analog clock, which is this one, and second is digital clock. So what is the difference between these two clocks? एनालॉग क्लॉक जो होती है उस पे 1 से लेके 12 तक नंबर्स मेंशन होते हैं या फिर उसमें मार्क मेंशन होते हैं 1 से लेके 12 तक. क्लियर? और उसमें टू हैंड्स होते हैं, आर हैंड, मिनट हैंड. सेकेंड हैंड भी होता है बट आज की क्लास में हम सिर्फ आर हैंड और मिनट हैंड के बारे में पढ़ेंगे. सेकेंड हैंड जब हम प्रॉपरली टाइम को देखना जान जाएंगे उसके बाद में हम सेकेंड हैंड को मेंशन करेंगे. क्लियर? एंड इन डिजिटल क्लॉक व्हाट हैपन हियर, जो भी टाइम हो रहा होता है उसमें कितने घंटे हुए हैं वो आगे शो होता है एंड एट द बैक साइड इन दो डॉट्स के बाद में जो लिखा हुआ होता है यहाँ पे मिनट्स शो होते हैं. क्लियर? टोटल 12 नंबर्स यहाँ पे शो होते हैं. सबसे ऊपर जो होता है दैट इज यहाँ पे 12 शो होता है, नीचे 6 होता है. क्लियर? एंड वन मोर थिंग, आज जो आपको पढ़ना है वो सिर्फ ये चीज है कि जो दो हैंड्स एनालॉग क्लॉक पे होते हैं उसमें से जो छोटा हैंड होता है उसे हम आर हैंड बोलते हैं. वो जिस भी नंबर पे होगा वो हमें ध्यान रखना है. और उस समय मिनट हैंड 12 पे अगर होता है तो जिस नंबर पे आर हैंड है उतना टाइम हो रहा होगा. इट मीन्स आज हम सिर्फ ये देखेंगे कि मिनट हैंड सिर्फ 12 पे है, वो और किसी दूसरे नंबर पे नहीं है, वो सिर्फ 12 पे होगा. और आपका जो आर हैंड है वो किसी भी नंबर पे होगा. तो टाइम क्या होगा, इस वीडियो से आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी. सो स्टूडेंट्स, सी दिस वीडियो एंड अंडरस्टैंड हाउ टू टेल द टाइम. Telling the time by a clock. This is called an analog clock, and as you can see, there are the numbers 1 through to 12 on the clock face. An analog clock has two hands. We call the long hand the minute hand, and we call the short hand the hour hand. When the minute hand is pointing to the number 12 on the clock face, we say it is something o'clock. The number that the hour hand is pointing to will tell us what hour we are in. Right now, the hour hand is pointing at the number 12. So the time on the clock is 12 o'clock. This is called a digital clock. The digits on the left will tell us the hour that we're in. The digits on the right tell us how many minutes have passed the hour. The time on both the analog clock and the digital clock both say 12 o'clock. Since there are 60 minutes in 1 hour, let's have a look at what happens when the minute hand moves clockwise around the clock. The minute hand is pointing to the 12, so it is something o'clock. The hour hand is pointing at the number 1, so the time is 1 o'clock. Let's watch the clock fast forward another 60 minutes.
What time is it? It is 2 o'clock. Try to remember the basics. When the minute hand is pointing at the number 12, it is something o'clock. So then look at the hour hand to tell you what that something o'clock is. The time is 7 o'clock. It is 11 o'clock. The time is 3 o'clock. It is 6 o'clock. The time is 8 o'clock. It is 4 o'clock. The time is 10 o'clock. It is 5 o'clock. The time is 9 o'clock. So students, I hope you understand that how to see the time when the minute hand is at 12. Clear? One more thing I want to tell you all. जब आवर हैंड एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाता है उस टाइम में मिनट हैंड पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर लेता है. क्लियर? इट मीन्स 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो मिनट हैंड पूरा 60 मिनट्स जब कंप्लीट करता है तब टाइम 1 घंटा आगे बढ़ जाता है. क्लियर? So that's all for today. And this was the introduction part. Our unit we will start in our next class. Thank you to all. Have a nice day.